Let's discuss about the topic digestion and nutrition, part 4. This part will include the topics like metabolic fates of nutrients in heterotrophs, and the topic will also include calories and energy and the average caloric values of macronutrients like of carbohydrates, lipids, and proteins, and micronutrients which are required in less quantities are minerals and vitamins. And at the end I will be discussing about some quick facts as well as some important MCQs. If we talk about the food that heterotrophs take in, heterotrophs जो भी फूड हासिल करते हैं तो उनके दो पार्ट्स होते हैं, उन फूड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. So macronutrients are the molecules which are required in large quantities. You can say that carbohydrates, lipids, and proteins, these are the basic molecules which we take in large proportion. And if we talk about micronutrients, ये हमें लेस क्वांटिटीज़ में ज़रूरत होती है. So they can be organic or inorganic. If we compare minerals and vitamins, minerals inorganic हैं और जो vitamins हैं वो organic हैं. तो ये दोनों जो होते हैं micronutrients हैं, so they are required in less quantities as compared to the macronutrients. The heterotrophs require food to meet their dietary requirements. They also need water to carry out their vital processes. एक तो हेटेरोट्रॉफ्स फूड हासिल करते हैं ताकि उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों, और दूसरी तरफ वो वाटर भी उन्हें ज़रूरत होती है ताकि उनके जो भी वाइटल प्रोसेसेस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो भी परफॉर्म हो सकें. Okay, let's talk about the concept of calorie. So you can see here the two words. The first one is not capitalized and the other one is capitalized. ये जो कैपिटलाइज नहीं है इट रिफर्स टू ए ग्राम कैलोरी, और जो कैपिटलाइज्ड है सो इट रिफर्स टू ए किलोग्राम कैलोरी. लेकिन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स एंड सम न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सरसाइज, बोथ वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली. हालांकि इनमें फ़र्क है कि ये जो कैपिटलाइज कैलोरी है इट रिफर्स टू ए किलोग्राम कैलोरी. एक किलोग्राम कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज, which is not capitalized. So this one, so we can say here, but nowadays both of these words are used interchangeably. ये words, the word kilogram was introduced ताकि हमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं और जो लार्जेस्ट यूनिट्स हैं लाइक किलोग्राम कैलोरी, उन दोनों के बीच हमें फ़र्क ज़ाहिर हो, इसलिए ये जो वर्ड है कैपिटलाइज कैलोरी ये इंट्रोड्यूस किया गया था. लेकिन बाद में अभी ये इंटरचेंजेबली, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही मीनिंग के लिए ये यूज़ होते हैं. तो इन दोनों वर्ड्स में कोई भी ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है. लाइक यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं. एक ये है कि लिपिड्स कंटेन 9.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम और लिपिड्स कंटेन 9.1 कैलोरीज पर ग्राम. ये दोनों स्टेटमेंट्स सेम ही हैं because they are used interchangeably. Okay, let's talk about the average caloric values of macronutrients. If we talk about carbohydrates and proteins, so they almost have similar average calories per gram. Like of carbohydrates 4.1 calories per gram and of proteins 4.4 calories per gram. अगर हम लिपिड की बात करें, लिपिड हैज़ द डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. Macronutrients are the molecules which are required by animals in large quantities. As we have already discussed, enzymes break down these molecules for two main purposes. So enzymes have the ability to catalyze and break down these molecules for two main purposes. दो इसके मकसद होते हैं. एक ये होता है कि जब इस मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है तो सबसे पहले हमें एनर्जी की प्रोविज़न होती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है,
और दूसरा इसका मकसद ये होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ताकि दूसरे दीगर मालिक्यूल्स जो हैं उनकी सिंथेसिस हो। कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर heterotrophs. You can see here carbohydrates, these are available in almost every sources of food, so that's why this is the basic source of energy for all the heterotrophs. Animals, as they are heterotrophs, they do not synthesize their own food, so they get carbon and energy from sugars and starches. The carbohydrates mostly come from plant sources. The carbohydrates are the major source of carbon, as they contain carbon atoms, which is utilized for the synthesis of other macronutrients like lipids and proteins. तो कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होता है जब भी हीटोट्रॉफ्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करते हैं, तो उनके अंदर बेसिकली कार्बन एटम होता है जो कि आगे जाकर फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स वहाँ पर हेल्प करता है। Let's talk about carbohydrates. The carbohydrates is categorized into three types. So this is the basic point of it, like polysaccharides, disaccharides, and monosaccharides, which are simple sugars and or glucose, and are made up of only one molecule. Cellulose is an example of polysaccharides. तो polysaccharide which is made up of many molecules. तो cellulose इसका example है. So cellulose is not digested in humans and other animals that they cannot digest. However, it is digested in herbivores. Herbivores के अंदर ये polysaccharide digest होता है. The cellulose is known as dietary fiber. Okay, the other name of cellulose is dietary fiber. Why? Because it helps in the passage of food through alimentary canal of mammals. So this dietary fiber reduce the risk of cancer of the colon. कोलन की कैंसर से की रिस्क से ये बचाता है। क्यों बचाता है? बिकॉज दिस फाइबर्स हेल्प इन एलिमिनेटिंग द फीसिस दैट माइट कंटेन म्यूटेजेनिक कंपाउंड्स। म्यूटेजेनिक कंपाउंड्स एक ऐसे होते हैं जो कि कैंसर काज कर सकते हैं। सो दे मे बी प्रेजेंट विद इन फीसिस, द वेस्ट आर अनडाइजेस्टेड फूड विद इन mammals. So that's why the basic function of dietary fiber is that they help eliminate the feces. The lipids are known as highly compact energy storage nutrients. सो लिपिड्स को हम हाईली कम्पैक्ट एनर्जी स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर स्टोर करते हैं, बिकॉज दे आर द मोस्ट कंसनट्रेटेड सोर्सेज ऑफ फूड एनर्जी। और ये हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं, इनके अंदर फूड एनर्जी हाईली कंसनट्रेटेड होती है, एज इट प्रोवाइड्स द एनर्जी ट्वाइस इन अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. मैनी एनिमल्स रिक्वायर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स. बहुत से एनिमल्स को अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे एक्ट एज प्रीकर्सर. ये जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये प्रीकर्सर के तौर पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि दूसरे स्टेरोल्स मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो. सच एज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स इंक्लूड लिनोलिक एसिड and linolenic acid and arachidonic sterols. So all of these are unsaturated fatty acids. The sterols are used for the synthesis of steroid hormones and cholesterol, which is incorporated into cell membranes. So cholesterol is basically the part of cell membrane. Cell membrane के अंदर cholesterol होती है which are derived from the sterols, जो कि स्टेरोल से डिराइव होते हैं. अदर लिपिड्स हेल्प मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय इंसुलेटिंग द बॉडी. सो देयर आर सम एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड रीजन्स, सो दे हैव ए फैटी लेयर ऑफ टिश्यू एडिपोज सेल्स concentrated in their skin. So those fat molecules help them to maintain a constant body temperature by insulating their body.
प्रोटीन्स बेसिक टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स. सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि प्रोटीन जो हैं वो किसी भी सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का एक बेसिक हिस्सा है. The major sources of proteins include other animals and milk. So they are mostly from animals, the meat of other animals and milk or dairy products. The proteins are required for the amino acids for the production of own proteins within the heterotrophs. Micronutrients. So these molecules are required in very less quantity as compared to the macronutrients like lipids, proteins and carbohydrates. तो macronutrients में minerals and vitamins आ रहे हैं. The macronutrients can also include molecules which are repeatedly used in enzymatic reactions. So micronutrients repeatedly enzymatic reactions में हिस्सा लेते हैं as part of certain proteins या किसी भी प्रोटीन का हिस्सा भी हो सकते हैं. as protein can be in any form like enzyme such as copper in hemocyanin, या तो पिगमेंट के साथ भी वो कंबाइन होते हैं. iron with the hemoglobin. The vitamins are organic whereas the minerals are inorganic. First of all, let's talk about these inorganic molecules like minerals. The minerals are categorized into two types. इसका पहला पार्ट जो टाइप होता है essential minerals. ये अहम minerals होते हैं. Why? Because they are required in relatively large quantities as compared to the other type of minerals. So that's why these are called essential minerals, or we can, in other words, we can say macro minerals. And if we talk about their examples, the examples of macro minerals: sodium and potassium. They are important for nerves and muscles. सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों नर्व्स एंड मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एनिमल्स need lose large quantities of such minerals such as sodium through urine. So through यूरिन के ज़रिए ये जो स्पेशली सोडियम है ये हमारी बॉडी से, ये जो हेटरोट्रॉफ्स हैं स्पेशली, इनकी बॉडी से रिमूव होती है या लूज़ होती है. बट इन ऑर्डर टू कंपेंसेट दैट, ये लॉस रिकवर करने के लिए वी नीड सच सोडियम फ्रॉम फूड. So that's why we continuously must take in through the food in large quantities in order to compensate the loss that occurs after the excretion of urine. The sodium is also lost through sweat. If we talk about apart from urine के अलावा सोडियम स्वेट के ज़रिए भी एक्सक्रेट होता है, बॉडी से रिमूव होता है. Calcium is also a macro mineral as they are required for muscular activities and for bone formation along with phosphorus. Macro minerals, they include calcium, component of bone and teeth, essential for normal blood clotting, needed for normal muscle, neuron and cellular function. क्लोरीन, प्रिंसिपल नेगेटिव आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. सेल के बाहर जो भी फ्लूइड होता है, सो दैट फ्लूइड इज़ नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. तो उनके अंदर प्रिंसिपल नेगेटिव आयन एक मौजूद होता है जिसे हम क्लोरीन कहते हैं. एंड क्लोरीन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन एसिड बेस एंड फ्लूइड बैलेंस, एंड इट इज़ आल्सो नीडेड टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक. मैग्नीशियम कंपोनेंट ऑफ मेनी एंजाइम, बहुत से कोएंजाइम्स का ये कंपोनेंट होते हैं, हिस्सा होते हैं. पोटेशियम मेजर पार्ट ऑफ बोन्स, ब्लड प्लाज्मा नीडेड फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म. एंड इफ यू टॉक अबाउट फॉस्फोरस, मेजर पॉजिटिव आयंस इन सेल, ये सेल के अंदर होते हैं. इज फर्स्टली वी टॉक्ड अबाउट द क्लोरीन आर फाउंड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर fluid. But if we talk about phosphorus, so they are found within the
environment of cells. So they are positive ions, whereas the chlorine are negative ions. So the positive ions phosphorus are present within the cytoplasm of cells. They influence मसल कंट्रिक्शन में फास्फोरस हेल्प करते हैं एंड न्यूरन एक्साइटेबिलिटी और न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी मतलब कि नर्व जो मैसेज होती है नर्व इम्पल्सिस होती है उन्हें कैरी आउट करने में हेल्प करती है एंड पार्ट ऑफ डीएनए का हिस्सा होता है आरएनए का भी हिस्सा होता है so here you can say it is meant for RNA ATP and energy metabolism सोडियम प्रिंसिपल पॉजिटिव आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये भी लाइक क्लोरीन तो ये भी सोडियम भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है इम्पोर्टेंट इन फ्लूइड बैलेंस ये भी फ्लूइड बैलेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है एसेंशियल फॉर कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट and if we talk about sulfur it helps in protein structure detoxification reactions and other metabolic activities माइक्रो मिनरल्स ये लेस क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं तो इसलिए हमें ट्रेस मिनरल भी कह सकते हैं और वो कौन से हैं फॉर एग्जांपल कोबाल्ट कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12 एसेंशियल फॉर RBC's प्रोडक्शन इनका मेजर फंक्शन ये है कि ये विटामिन B12 का हिस्सा होता है और RBC की प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं कॉपर इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो मिनरल as they are component of many enzymes part of cytochrome in mitochondria and essential for melanin and hemoglobin synthesis fluorine it is also component of bone and teeth and prevents tooth decay से ये बचाता है iodine component of thyroid hormones and if we talk about iron component of hemoglobin myoglobin enzymes and cytochromes manganese activates many enzymes बहुत से enzymes को activate करता है and enzyme essential for urea formation यूरिया की formation में भी help करते हैं manganese and part of Krebs cycle एंड मोलिब्डेनम पार्ट ऑफ सम इंजाइम्स ये कुछ इंजाइम्स का हिस्सा है एंड सेलिनियम पार्ट ऑफ एटलीस्ट 70 इंजाइम्स नीडेड फॉर वूंड हीलिंग एंड फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं सेलिनियम एंड वूंड हीलिंग किसी भी ज़ख़म को हील करने में भी ये हेल्प करते हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर इज जिंक It is also helpful in wound healing and fertilization. Vitamins. The word vitamins has been taken from a Latin word vita that means life. So some metabolic activities depend on a very small portions of vitamins which are organic substances. तो विटामिन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ये हमें स्मॉल पोर्शन में ज़रूरत है लेकिन फिर भी ये जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं विद इन हीटोट्रॉफ्स सो दे आर वेरी मच हेल्पफुल द vitamins आर categorized into two major groups so the first one are water soluble vitamins and the others are fat soluble vitamins वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स सो इन वाइटामिन्स में विटामिन बी एंड सी ये इनके एग्जांपल्स हैं वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स के एक है थियामिन विटामिन B1 नीडेड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड सिंथेसिस ऑफ राइबोज एंड राइबोफ्लोविन जिसे हम B2 कहते हैं needed for oxidation of glucose and fatty acids and for cellular growth and niacin its other name is nicotinic acid vitamin B3 oxidation of glucose and synthesis of proteins fats and
nucleic acids are the major functions of this vitamin. Vitamin B6 synthesis of proteins and various amino acids for the conversion of tryptophan into niacin and for the production of antibodies and for synthesis of nucleic acids. So these are the major functions of vitamin B6. Pantothenic acid, vitamin B5 needed for oxidation of carbohydrates and fats. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है. इफ़ यू कैन नोट वन थिंग, ये जो ऑक्सीडेशन नहीं इन ब्रेकडाउन है, सो बोथ ऑफ दीज वर्ड्स मीन द सेम. ऑक्सीडेशन एंड ब्रेकडाउन इन दोनों की मीनिंग सेम है. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इट मीन्स दैट ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. Cyanocobalamin, vitamin B12 needed for synthesis of nucleic acids and for metabolism of carbohydrates and plays role in synthesis of myelin in nerve. Folate, folic acid and B9 synthesis of DNA, production of normal red blood cells. And biotin, vitamin B7 synthesis of nucleic acids. Ascorbic acid, vitamin C, production of collagen, conversion of folate to folinic acid and metabolism of certain amino acids. It also helps promotes absorption of iron and synthesis of hormones from cholesterol. कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ascorbic acid. So you can see here that the ascorbic acid is other name for vitamin C. And all of the first vitamins belong to B category, and the last one is C. So both of these, vitamin B and C, are examples of water soluble vitamins. And fat soluble vitamins include vitamin A. In short form you can say ADIC, vitamin A, D, E and K. In short form you can say like this. So ADIC is an acronym for fat soluble vitamins. So it is an easy trick to remember. Vitamin A necessary for synthesis of visual pigments. Visual pigments जो भी आई के अंदर होते हैं. So its basic components are vitamin A. म्यूकोप्रोटीन्स, म्यूकोपोलिसैकेराइड्स, इनके अंदर भी विटामिन ए होते हैं. एंड फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स. Vitamin D promotes absorption of calcium and phosphorus. So if there is already presence of calcium and phosphorus, so the absorption of both of these is carried out by vitamin D and promotes the development of teeth and bones. Vitamin E, an antioxidant. Why it is called antioxidant? Because it prevents oxidation of vitamin A and polyunsaturated fatty acids. May also help in stability of cell membranes. सेल मेम्ब्रेन्स की स्टेबिलिटी में भी हेल्प कर सकते हैं. Vitamin K needed for synthesis of prothrombin that helps in blood clotting. So let's talk about some quick facts about digestion and nutrition. Upper canine in walrus is used for digging mollusks and for locomotion. तो वालरस एक एनिमल है, एक कार्निवोरस एनिमल. तो उसमें अपर केनाइन मौजूद होता है, वो चीज़ यूज फॉर डिगिंग मोलस्क एंड फॉर और लोकोमोशन पर्पज़ के लिए भी वो अपर केनाइन यूज़ होता है. एंड सम रोडेंट्स, कुछ ऐसे रोडेंट्स हैं जो कि आर्डर रोडेशिया से बिलोंग करते हैं.
like squirrel and rats, certain old world monkey, the vestibule extends. एक वेस्टिब्यूल स्ट्रक्चर होता है उनके चीक पाउचेस में, तो उस पाउचेस में वो फूड टेम्परेली स्टोर करते हैं। मेस्टिकेट, वो जनरली वो फूड मेस्टिकेटेड होता है, च्यू किया होता है, और वो बाद में डाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। एलिफेंट टस्क आर द अपर इंसीजर्स। एलिफेंट के जो टस्क हैं वो अपर इंसीजर्स हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द टीथ ऑफ फिशेस, दे आर एक्चुअली द मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स। उनके जो प्लेक्वाइड स्केल्स हैं वो एक्चुअली पहले फिशेस में क्या टीथ हैं। एंड इन्फेक्टेड गम्स एंड जॉ सॉकेट्स, जेकबसन ऑर्गन, वोमिरो नसल ऑर्गन, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रिप्टाइल्स में होता है, लाइक लेजर्ड्स, स्नेक्स एंड स्फिनोडोन, इज यूज फॉर स्मेलिंग फूड। फूड को स्मेल करने में हेल्प करती है ताकि जो भी फूड का केमिकल जो नेचर है उन्हें रिकग्नाइज कर सकें। फेंग्स ऑफ पॉइजनस स्नेक, स्नेक्स के अंदर जो फेंग्स होते हैं जिसके ज़रिए वो वेनम रिलीज़ करते हैं, तो वो जो फेंग्स हैं वो अटैच्ड हैं एक्चुअली विद मैक्सिलरी बोन्स। न्यूक्लियसेस जो एंजाइम्स हैं ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर न्यूक्लियसेस एंजाइम हैं, दे डाइजेस्ट अबाउट 80% ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स दैट वी टेक इन थ्रू फूड। ब्लड इज डाइजेस्टेड बाय ट्रिप्सिन एन एंजाइम एंड ईसोफेगस डज नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम। ईसोफेगस एक एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, so it doesn't secrete any kind of enzyme. Stomach is absent in labio, hagfish and lamprey. So these are three examples of animals that do not have stomach. Enterokinase, enzyme released by the small intestine. So it is actually a non-digestive protease. So it does not take part in digestion, but it helps in converting inactive enzyme into active form. Some important MCQs. The first one is some animals such as rabbits eat their own feces. वो अपने feces को eat करते हैं to digest cellulose, ताकि वो further cellulose को digest करें again. So these are termed as what? So इन animals को हम क्या कहते हैं? Autophagus, omnivorous, coprophagous or macrophagous. So the correct answer is C, coprophagous. The unit of absorption of food is, so definitely its answer is simple. The first one is vilus, small intestine, lacteal, blood capillary. The correct answer is vilus. इसका plural form villi. And World Food Day is 16th of September, 17th of September, 16th October and 16th December. The correct answer is 16th October. So here are more MCQs. Which of the following is a fermentation pouch where microorganisms aid in cellulose digestion? Cecum, appendix, rectum, none of these. The correct answer is cecum. The gizzard of cockroach contains 6 teeth. Which of the following is a ruminant? All of these: sheep, cattle and deer. Which of the following kinds of mammalian teeth are modified for ripping? That is canines, which are well developed in carnivorous animals. Which of the following reptiles have non-protrusible tongue? A tongue which cannot be extended out of the mouth. So basically both turtles and crocodiles. So the correct answer is both A and B. The Brunner's glands and the crypts of Lieberkühn are found in submucosa of duodenum. So for more MCQs you can read my zoology handbook. Thank you so much.